Hello everyone, my name is Aarti Bhosle. I welcome all of you to the extended booth of Green Solution and Mahatech. So we Green Solution provide all the environmental solutions from start to end in environment, health and safety. We provide all the environmental services like Maharashtra Pollution Control Board, consent to establish, consent to operate, consent to renewal, then turnkey projects in effluent treatment plants, sewage treatment plants, ZLD and RO also. Then we do have a NABL approved environmental laboratory. We do air, water, food, soil testing over there. Then we have a separate environmental sustainable division. We provide all the services regarding green building certifications, that is IGBC Griha lead, also carbon footprint study report and life cycle assessment also. So basically this is the model for carbon footprint calculation. So this is the positive model of any industry and this is negative model we can say. So in any industry there are direct and indirect emissions which we can count. So in this industry we can say these are process emissions and DG set emissions are the direct emissions, and indirect emissions are because of use of electricity. Then raw material transportation, final product transportation, employee commuting are also leads to the carbon footprint. So we help you to calculate your carbon footprints, and also by suggesting proper mitigatory measures we help you to reduce your carbon footprints. So this is all about carbon footprint. The next part is life cycle assessment. Life cycle assessment means to assess any product's environmental impact in the system boundary. There are 4 system boundaries, that is from cradle to grave, cradle to gate, gate to gate. So we assess in every system boundaries. So this is the model for life cycle assessment. Life cycle assessment means to assess any product's environmental impact from its raw material extraction stage to the end of disposal phase. So we can see here raw material extraction phase, material processing, product manufacturing, product distribution, product use and disposal phase. So we can assess your product's total life cycle, assess how much your products impact on the environment throughout its life distribution phase. So we do this by Simapro licensed software. We have the software with us. So the impact categories in form of global warming potential, then ozone depletion potential, acidification, eutrophication. There are around 20 impact categories. Whatever you want we can assess for you. So these carbon footprint and life cycle assessment services help you to product your product's environmental performance in a sustainable way. So you can highlight your product in sustainable marketing. Thank you and thanks for visiting our stall. नमस्कार, मेरा नाम सागर अहिवड़े है। मैं ग्रीन सोल्यूशन का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। वी आर वर्किंग वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विद टर्नकी प्रोजेक्ट्स लाइक ETP, STP, WTP, RO। हम लोगों ने आज एग्जीबिशन में MBBR टेक्नोलॉजी का मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है। फर्स्टली ये कलेक्शन टैंक है, एरेशन टैंक है, वहाँ पे ट्यूब सेटलर टैंक है, फिल्टर फीड टैंक है और ट्रीटेड वाटर टैंक है। फर्स्टली यहाँ पे कलेक्शन कोई भी इफ्लुएंट कलेक्शन टैंक में आता है, जो सोसाइटी रही या इंडस्ट्री रही, यहाँ से हम पंपिंग करके एरेशन टैंक को दिया जाता है। ये एरेशन टैंक में MBBR मीडिया है। यहाँ पे एरेशन देने के बाद बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। बैक्टीरिया ग्रोथ होने के बाद ये वाटर ट्यूब सेटलर में जाता है। ट्यूब सेटलर में स्लज नीचे सेट हो जाता है और क्लियर वाटर फिल्टर फीड टैंक में आते हैं। यहाँ से पंपिंग करके सैंड मीडिया, कार्बन मीडिया को दिया जाता है और उसके बाद वो यूवी के लिए जाता है और उसके बाद वो ट्रीटेड वाटर टैंक के लिए जाता है। ये हमारा पूरा मॉडल है MBBR टेक्नोलॉजी बेस। थैंक्स फॉर द विजिटिंग आवर स्टॉल एट ग्रीन सोल्यूशन महाटेक। थैंक यू वेरी मच।